Hello, Jai Shri Krishna. Welcome to our virtual class. Today we are going to start with our first chapter, Nature, Purpose and Scope of Business. This is our lecture number 8. So, till now, so far what we have done is, we studied the evolution and a few basic concepts related to OCE. And those basic concepts would be useful to you in other subjects also, in accounts also to some extent, and in economics also. Today we are going to start with our chapter number 1. So open your page number 1 of first chapter. The title of the chapter is Nature, Purpose and Scope of Business. Now this chapter, the title itself says that there are three things that we need to study about business. The nature of business, that is meaning and the characteristics, features of business, that is one, nature. Purpose is the objectives of business, and scope of business means how far the business is spread out. बिजनेस कितना स्प्रेड आउट है, बिजनेस कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, और बिजनेस के आगे क्या डिविजन्स हैं. तो तीन चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है. पहला तो है ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, दैट इज फीचर्स. फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज फीचर्स. पर्पस मीन्स ऑब्जेक्टिव्स. Again, there are two types of objectives, and scope of business means what is business further divided into, what all things business includes. So what is included in business? So what does business include? Now, just to verify this, let us open our textbook and see. The first portion is introduction. उसके बाद है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, देन इज बिजनेस. उसमें बिजनेस का डेफिनेशन और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बिजनेस का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. Then is objectives. If you see on page number 3, we have got objectives of business. Economic objectives पेज नंबर 3 पर है. और फिर social objectives, तो objectives हम पढ़ने वाले हैं, that is purpose of business. उसके बाद हम पढ़ेंगे risk, because इसके अंदर risk objectives में characteristics में risk and uncertainty का एक point है, उसको थोड़ा सा elaborate किया गया है. रिस्क किस तरह के रिस्क होते हैं, नेचुरल रिस्क और मैन मेड रिस्क होते हैं, तो वो उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ पर दिया है. क्योंकि बिजनेस वी आर स्टडिंग, तो वी आर ऑल्सो स्टडिंग द अदर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. बट माइंड वेल, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, बाकी दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है. प्रोफेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एम्प्लॉयमेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंशिएट किया गया है. एंड देन वी हैव गॉट, नाउ बिजनेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, here they have not used the word industry, they have directly used the word trade. See, industry is further divided into trade and commerce, right? But here they have not specified anything about industry, they have directly gone to trade. So trade and commerce, ट्रेड में फिर इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन टेकन. एंड देन इंडस्ट्री के टाइप्स उन्होंने कह दिए. इंडस्ट्री की मीनिंग, देयर आर टू मीनिंग्स, दे हैव नॉट स्टडीड दोस टू मीनिंग, दे डायरेक्टली गॉन टू द इंडस्ट्री की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी क्लासिफिकेशन, नॉट इवन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दिस इज ऑल इज देयर इन दिस चैप्टर. In this chapter, basically we are going to study what bifurcation of the differentiation between economic and non-economic activity. Economic activity तीनों, business, job और profession, business employment or profession. Also business has been explained in detail because this chapter deals with basically the nature, purpose and scope of business. तो nature of business मतलब उसकी characteristics,
पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका स्कोप, मतलब फिर आगे बिजनेस में क्या आता है, उसमें आता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो कॉमर्स पार्ट दे हैव नॉट टेकन इन दिस चैप्टर बिकॉज इन द फर्दर चैप्टर्स दे हैव टेकन कॉमर्स पार्ट। तो इसमें दे हैव टेकन इंडस्ट्री नॉट कॉमर्स। इंडस्ट्री में ट्रेड, ट्रेड में देन दे हैव टेकन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। एड्स टू ट्रेड भी उन्होंने दे हैव नॉट टेकन इन दिस इन द नेक्स्ट। So this particular entire chapter is dealing with only business part. Okay, so we'll start with the first page number 1, the introduction part. Economic activities keep trade and commerce alive all over the world. In your city or village, a potter, a blacksmith, a weaver, a cobbler gets economic benefits or monetary return through economic activities. My textbook is a very lightly printed. उसका print जो है बहुत light है, it's taking time for me to read. No problem. Thousands of employees work in cities or in small or big factories to get employment. All these activities are economic activities conducted with the objective of to earn income. Business is an economic activity which is conducted with the objective of profit. Besides business, profession and employment are also the types of economic activities. Human needs are increasing continuously. Man has to perform economic activity to satisfy the needs. For example, farmer produces food grains, lawyer charges fees for representing a case in the court on behalf of his client. A worker gets wages by working in the factory. All these activities are called economic activities, and as the objective of these activities is to get monetary return. So this is what we have already studied. Economic activities deal with exchange. It deals with income earning, income spending and exchange related activities. So any activity where there is income earning but no spending in exchange, that activity is not considered to be economic activity. And we see people around us doing economic activities. You go out and you see people are working, they are busy with some or the other activity. And when they are doing this activity, they are either doing an economic activity or a non-economic activity. Non-economic activity will be such where either income earning is not there or spending is not there and exchange is definitely not there. So when there is no exchange involved, that activity will become a non-economic activity. And because it is non-economic activity, it will not be connected with OCM or economics. So that activity has to be refrained, that has to be kept aside. We don't have to study that activity. So we are more interested in economic activities. And economic activities are those where exchange is involved. And we find so many people doing such kind of activities. The cobbler who is doing work, who is working to get something in return, to earn something. A grocery store would give you food grains and will accept money from you. You go to a stationery shop, there you will be giving some money and getting notebook or pen or pencil. So somewhere there is exchange involved. You give one thing of value to that person and he gives you something of value to you. It is the things of value that are exchanged with each other. And when such kind of exchange takes place, then we call that is a economic activity. That's an economic activity then only. Otherwise it is not an economic activity. So such kind of economic activities, they keep the economy moving. Economic activities will show the incomes of the people and expenses of the people. One person's expenditure is the other person's income. And when everybody is involved in economic activity, some people are earning and some people are spending.
The earnings of the people, that is the income of the people, when you sum up, जब उसको टोटल किया जाता है तो हमको मिलता है पूरे नेशन का इनकम। तो इंडिया का इनकम मतलब क्या? इंडिया का इनकम है इंडिया के सारे लोगों का इनकम। तो इंडिया में जितने लोग भी पैसे कमाते हैं उनकी इनकम्स को, उनकी इनकम जो होती है उसको अगर हम टोटल करें, उनको अगर आप ऐड करते जाए, उनको सम अप करते जाए तो हमको एक फिगर मिलेगा। उस फिगर को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो है दैट शोज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टू सम एक्सटेंट। एट दिस लेवल, बाय टेलिंग दिस इज सफिशिएंट। There are concepts like GDP and others also, but that you will be studying when you study further in economics. Okay. आप ही के टेक्स्ट बुक में आगे के चैप्टर्स जो इकोनॉमिक्स में उसमें वो सब आप पढ़ेंगे। इस स्टेज पर एज ऑफ नाउ आपके लिए एट दिस पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि पूरी कंट्री का इनकम जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट बताता है। कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ती है जब इनकम बढ़ता है, और कंट्री की इनकम तब बढ़ेगी जब लोगों की इनकम्स बढ़ेगी, और लोगों की इनकम्स तब बढ़ेगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर बंद हो जाती हैं तो इनकम भी रुक जाएगी और डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। ड्यूरिंग दीज कोरोना टाइम्स, अभी जो ये टाइम समय चल रहा है, कुछ एक महीना पहले जब थोड़ा भी लॉकडाउन जब थोड़ा भी लॉकडाउन लिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है, जब लॉकडाउन ज़्यादा था, ठीक है, तब इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल पर आ गई, मतलब रुक गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई, पीपल वर नॉट वर्किंग, offices were closed, schools were closed, they're still closed, so many things were closed. Only few, very few limited shops were allowed to perform their economic activities, but others they did not have to do their economic activities, so उनकी economic activities रुक गई। तो economic activities रुक गई तो their incomes also lowered down, incomes reduce हो गए। जब लोगों की इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो टोटल नेशनल इनकम also will be reduced. National income will be reduced, so economy will be affected. Okay, as a whole, the country will be affected, and its development also will slow down. धीरे हो जाएगा डेवलपमेंट, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है जिस स्पीड से होता है उसमें थोड़ा ब्रेक लग जाएगा, तो धीरे धीरे होगा, ये तो रुक जाएगा, किसी समय पर रुक भी जा सकता है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है, यही देश को जिंदा रखती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करते रहेंगे तो देश जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो दिस कीप्स द कंट्री अलाइव, दैट इज व्हाट द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट सेज दैट द कंट्री इज अलाइव, द वर्ल्ड इट कीप्स द वर्ल्ड अलाइव, पूरी दुनिया को ये जिंदा रखती है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। फर्दर इज some persons in society perform activities without aiming at economic benefits or monetary returns. For example, a social worker is working with the aim of social service. If doctor provides free medical service with the motivation of social service, it is called non-economic activity. There is an objective of economic benefit. There is no objective of economic benefit, monetary consideration or monetary return. Consideration means return. Consideration का मतलब है return is a legal term. Return जो होता है कुछ something in return, reward, उसको legal language में बोलते हैं consideration. So there are certain people who might not be having any aim of earning income. So they are doing it just out of service, social service, service towards humanity. So we call them as non-economic activity because their monetary return is not expected. That means exchange is not there. Okay. So economic activity and non-economic activity. This was the introduction. Now from this we come to know that there are two types of activities. One when monetary return is got, that is it is expected, and there is exchange. Other where there is no exchange, okay, you do work only out of humanity or social service or service towards humanity or a feeling of patriotism, feeling of love, sympathy, affection, etc. Where you don't expect anything and you do not get anything in return, so exchange is absent. Okay. Economic activity.
Economic activity means an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. Consideration मतलब return या reward. Man has to perform economic activity for his livelihood, or that he can satisfy the needs by getting money. All economic activities are called productive activities. Underline this is a statement, 2-mark statement. 2-mark statement. Write down one more question for the homework. See, now onwards, whatever homework I will be giving you in the form of questions as and when we read the lesson. And I'll give this is a question and the answer also I will tell. You will have to just write down in your homework notebook. So the first question is the statement. All economic activities are called productive activities. Single inverted commas will लिखिए, full stop, explain. First you will write down the questions. ठीक है? You will write down the question. You are sitting with your classwork notebook. Yes, I hope. आप अपनी क्लासवर्क नोटबुक अपनी पेन के साथ बैठे हैं, तो आप ये वाला मार्क कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए ऊपर होमवर्क, राइट, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। और जब आप अपने नोटबुक में होमवर्क नोटबुक में जब होमवर्क लिखेंगे तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है और उसका आंसर उसको एक्सप्लेन करना है खुद के वर्ड्स में। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सप्लेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज give 2 examples. Explain economic activities, full stop, give 2 examples. Okay, further, a person doing economic activity satisfies the needs of others and gets economic benefits for him. For example, a farmer by producing food grains, a weaver by manufacturing cloth, a carpenter by manufacturing furniture, satisfies the needs of different classes of society and by this way gets economic returns. Economic activity is at the center of the modern world. दूसरा statement, economic activity is at the center of the modern world. So why does a person do economic activity? Why at all he does an economic activity? कोई भी आदमी economic activity क्यों करता है? Because he has got unlimited needs to be satisfied. Unlimited wants to be satisfied. And in order to satisfy these unlimited wants, a human being has unlimited want but limited money, limited means. Money is one of the means. So in order to satisfy those unlimited wants, he needs some means. उसको जरिया चाहिए होता है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जरिया, ये मीन्स जो है, वन ऑफ द मीन्स इज मनी। सो हाउ विल ही गेट मनी? सो ही विल बी इंडल्जिंग हिमसेल्फ इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो किसमें इंडल्ज होगा, क्या करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। और जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उसको मिलेंगे पैसे, दैट इज मनी। मनी इज द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इज द इम्पॉर्टेंट मीन्स। और इसी मीन्स के जरिए, इसी मनी के जरिए वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो जब व्हेन ही इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, he is satisfying the wants of other people and in return he gets money by which he satisfies his wants. So by indulging into an economic activity, he benefits others also and he benefits himself also. Likewise, everybody who is involved in some or the other kind of economic activity, they are benefiting themselves also and others also. And such kind of economic activities only keep the world moving. Such activities only keep the world moving. Because if activities don't take place, economic activity doesn't take place, the world will come to a stagnation. Stagnation मतलब it will stop moving ahead, रुक जाएगा, it will come to a standstill. Okay. Further, turn the page to page. We'll come to page number 2. Write down the question.
What is non-economic activity? Give two examples. 2 marks question. What is a non-economic activity and give two examples. The objective of non-economic activity is either monetary returns nor economic gains. non-economic activity के लिए ना कोई monetary return चाहिए होता है ना कोई economic gain. जब कोई भी एक्टिविटी मॉनेटरी रिटर्न या इकोनॉमिक गेन से नहीं की जाती है तब वो एक्टिविटी क्या हो जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सम persons in society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gains. For example, social service carried out by social worker, then nursing activity by mother for her children, working of volunteer propagating during propaganda for the unity of community. Okay, volunteer working to relief camp where the people are affected by some natural calamity like earthquakes, tsunamis, etc. are called non-economic activities. Okay, these are the examples that they have given. The motivating factor for these activities are service to country, service to society. Feeling of all these brings change in the life of a person. Okay. So what are non-economic activities? Non-economic activities are such where there is no monetary return and no economic gain. Such activities are carried out not because of money, not because I am going to get some money, but because I have to give some service. Okay, because I want to give some service, because I want to work for others, because I don't want anything in economic terms from them. Okay, because I feel that I have got some kind of affection, some kind of sympathy, some kind of feeling of patriotism for my country, some kind of feeling of humanity for them. तो जब इस भावना से जब काम होता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. जिस तरह से कोई वॉलेंटियर वो सुनामी या और कोई अफेक्टेड एरिया में जाकर वो सेवाएं देता है तो ही वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करता, उसको कुछ मिलता नहीं है, और कुछ मिलता नहीं मतलब कुछ एक्सपेक्ट मतलब कुछ ही इज नॉट अर्निंग इन, देयर इज नो एक्सचेंज, तो एक्सचेंज नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अ मदर नर्सिंग हर चिल्ड्रन, mother taking care of her children, therefore for those services she is not getting anything in return, so there is no exchange. Okay, it is a non-economic activity. Such kind of n number of examples you can give for non-economic activities. Okay, so we have talked a lot much till now on economic and non-economic activities. So with the help of your economic or non-economic activity knowledge, you can very well differentiate between the two. The differentiation here is given. There are 4 points of differences that they have given. You can make a question. Distinguish between economic and non-economic activities. 2 marks. So 4 points of differences can be given. Distinguish between economic and non-economic activities. The first, so see now, one thing that I need to tell you, whenever you write down the question of such kind, that is distinguish between, what you need to do is this. Suppose you are distinguishing between two things. There are 2 points or 2 components that you are distinguishing between. The first column will be your serial number. The second column will be point of difference, or only point, simply point, and the rest to whatever you are distinguishing. और जो दो है वो आप जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उन दोनों के टाइटल्स यहाँ पर आएंगे.
अब यहाँ पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड जॉब, तो उसमें तीन आएगा मतलब वो 3 और ये 2 मतलब 5 आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा टिल योर बोर्ड एग्जाम्स एज फार एज OCM is concerned. तो इन OCM we have to write down the distinction वाला question in this way only. Okay, so here economic and non-economic activities will write down a serial number and on what basis you are differentiating. कौन सी चीज़ है जो दोनों में अलग है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखनी होंगी और उनके बेस पर जो आप डिस्टिंक्शन उन दोनों में बता रहे हो वो डिस्टिंक्शन आपको लिखना होगा. So that is how we will be working. That is the format that you will be following as far as the distinction between question is asked. Okay. So the first point of difference or distinction is objective. मतलब दोनों के ऑब्जेक्टिव जो अलग होगा वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, because that is a point that is different in both. So ऑब्जेक्टिव दोनों के अलग हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट. So here the motive means objective is to get economic benefit. Non-economic activity का objective क्या है? The motive is social service, human service or service to the country. Human service समाज की सेवा, इंसानियत की सेवा या देश की सेवा. तो किसी भी तरह से आप किसी की सेवा करें या किसी भी तरह से आप ऐसा कोई काम करें जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व ना हो, तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. The second point of difference is, it is totally not visible in my book, expectation. Now that is expectation, though it is not visible. From the point we can make out, expectation is profit, salary, fees and maximization of. So what does a person doing economic or non-economic activity expect from his work? कोई आदमी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? तो वो एक्सपेक्ट करता है, अगर देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन. अगर वो बिजनेस करता है तो वो सैलरी एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो वो सैलरी या वेजेस एक्सपेक्ट करेगा, और अगर वो प्रोफेशन में है तो ये एक्सपेक्ट फीस. तो यहाँ पर हमारा इसमें पॉइंट क्या आएगा? द एक्सपेक्टेशन इज प्रॉफिट, सैलरी और फीस, राइट, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. अगर बिजनेस में है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर मैक्सिमाइजेशन और दैट ऑल्सो कैन बी देयर एक्सपेक्टेशन. And in non-economic activity, expectation is service to country and social service. And why does a person do non-economic activity? Why does he perform that? Because he is not expecting any monetary gain, no monetary benefit, no monetary return, only service to others, to society, to the humankind, the mankind, and to the country. Type. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन. सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम फर्दर डिवाइड करते ही नहीं है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इकोनॉमिक्स में कोई स्थान, कोई जगह नहीं. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोफेशन हो. रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होता है. जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती है, बट इन द अदर टू इन अनसर्टेनिटी इज रिस्क इज देयर. बट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर इज नो रिस्क, नो अनसर्टेनिटी, राइट? And we do not even consider non-economic activity in our study, because there is no exchange involved. Exchange is the soul of economics and soul of the entire everything, soul of the entire economy. तो पूरी इकोनॉमी का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका सोल क्या है? उनका सोल है the soul is exchange. So if there is no exchange, you do not consider it as a trade. If it is not trade, it is not considered as a part of commerce. If it is not commerce, it is not a part of business. If it is not business, it is not a part of economic activity. And if it is not economic activity, it is not the part of economics also.
सो द इकोनॉमिक्स या OCM जो भी हम स्टडी करते हैं उसका द सोल ऑफ इट, द सेंट्रल पॉइंट, द थीम इज व्हाट? एक्सचेंज. So that is the difference between economic activity and non-economic activity. You can add a few points. जैसे एक और पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक पॉइंट इसमें आप ऐड करेंगे एग्जाम्पल. एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं मीनिंग. So an activity which is carried out with an objective of economic return is economic activity. The activity is carried out of love, affection, sympathy is non-economic activity. Objective तो है पर वो meaning, that is the meaning. Okay, so in this you can write down meaning. Generally, when we start this differentiating, the first thing that you do is the first point has to be meaning. उसके बाद रहेगा objective और ये सब कुछ और last में रहेगा example. The fifth point according to this, so there are 4. So this is first. The rest of the 4, that is 5, the 6th point will be the example. So you can give example. This economic activity you can give example. A teacher teaching in a school and getting salary is a economic activity. A teacher teaching to her daughter is non-economic activity because no exchange is involved. Similarly, you can give any example, and that will be your 6th point. So our 6 points of differences can be taken here. 6 points of difference can be taken this way. Then we come to types of economic activities. But these types of economic activities we are not going to study today. We are going to study types of economic activities, that business, profession and employment in our next class. All these 3 types of economic activities will not be finished in one lecture, but we will try to finish as much as we can. We'll be finishing in the next lecture business and its meaning, its characteristics. That much at least we can do, and if time permits, we will start with the objectives of business. Till then, keep doing the homework that I have given to you. Try to do the homework on the same day when it is given. That means on the same day when you see the video, see the lecture. उसी दिन आप अपना होमवर्क कर दो तो बाद में पायलट नहीं होगा. जिस वक्त आपके होमवर्क के लिए चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म सेटअप हो जाएगा तब आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, और उस वक्त बहुत सारा होमवर्क ना करना पड़े वो अवॉइड करने के लिए आपका होमवर्क जब दिया जाता है तब करते रहें. टिल दैट टाइम टेक केयर, कीप रीडिंग एंड कीप डूइंग योर वर्क. बाय बाय.